इस वाड़ी की कैरी हम ले जा रहे हैं अहमदाबाद टू गिव टू फैमिली एंड फ्रेंड्स। और समाज में भी सब लोग हैं ना जो हमको मतलब दे आवर फ्रेंड्स, वी गिव देम। बाय मम्मी। बाय। गाइस जाने से पहले वी स्टॉप्ड एट पटेल आइसक्रीम इन मानुकुआ। आप लोग यहाँ पे आओ तो मानुकुआ में कुल्फी खा के जाना, बहुत ही अच्छी होती है। मामा लोग निमक ऊपर चाल ले रहा है। दूर ओके। दिस इज सूरज बारी ब्रिज। यहाँ पे कच्छ एंड हो चुका है, अब आगे अदर पार्ट्स ऑफ गुजरात है स्टार्टिंग। लेकिन दोनों साइड, ये ब्रिज के दोनों साइड सॉल्ट यहाँ पे बन रहा है। So apparently this is just like darya no pani and then it evaporates and they collect the salt. You can see those things. तो जो जाए तो नेचुरल हेल्दी सोडियम तो आज है सॉल्ट आपे तो पची हमारे पास तो रिफाइन होके आता है वाइट। रिफाइन करो हम मम्मी बोल रहे रिफाइन करवू ज पड़से न अटार खाई जैसो आपे। गाइस आप लोग पुराने जमाने की बिल्डिंग्स देख लो यार, बहुत ही पुराना ये केसर केरी। चलो हम लोग अहमदाबाद आ चुके हैं बाय द वे। आई हैवंट व्लॉग सो मच ऑन द वे। ये है कालूपुर। ये रहा मंदिर का एंट्रेंस, ब्यूटीफुल। और यहाँ पे बहुत सारी शाक भाजी है गाइस, बहुत ही भीड़ होती है यहाँ पे। हम लोग हमारी गाड़ी बाहर छोड़ के आए हैं। एंड वंस अगेन आज एकादशी है ना, तो बहुत सारे लोग होंगे। गाइस ये है पुराना कालूपुर का स्वामीनारायण मंदिर। इट्स लाइक द प्रशांत मंदिर यहाँ पे। सम ऑफ द पिलर्स आर मेड फ्रॉम द वुड। जब भगवान थे ना तब के टाइम से, तो मतलब भगवान अभी भी है, बट यू नो व्हाट आई मीन। गाइस हैविंग लंच इन द समाज। बाय द मॉम को एक नहीं था से हूँ खाऊँ मजा। टाइम टू गो। मम्मी इज़ गोइंग, मैं तो नहीं जा रही हूँ। केसर केरी का लास्ट बॉक्स रहा है। मम्मी यात्रा करके जाएंगे, सारे मंदिर में देते जाएंगे। क्या क्या मंदिर में जाओ छो? कमियाड़ा, सारंगपुर, ढोलेरा, गढ़ड़ा, बोटाद, બીજું છે કે सरदार पटेल यूनिवर्सिटी। વચ્ચે जी कोई काम से तो भेगा थाते यार। मेरी भी ऑलमोस्ट पैकिंग हो चुकी है बिकॉज आई एम लीविंग टुमारो। माई फ्लाइट इज टुमारो टू सिडनी। एक केरी का बॉक्स मेरे लिए बिकॉज आई हैव टू गिव इट टू माई फ्रेंड। क्या केवी पड़ी है जो नीचे थी पाकवा मंडी है। हम लोगों ने हार्ड ढूंढ के निकाली थी, नीचे वाली पक चुकी है, बट अभी हार्ड है बड़ी। गाइस ब्रेकफास्ट में है पोहा। हाँ समाज में हमारा जितना अच्छा पोहा बनाते हैं ना, बहुत ही अच्छा है। हम लोग मिर्चा के साथ खा रहे हैं। क्या है लगन था लोकेशन। गाइस यहाँ पे इतनी सारी गाड़ियाँ क्यों खड़ी है, सारी ब्लैक गाड़ी क्यों है यहाँ पे, किसकी? आई डोंट वंडर हुज कार्स दीज आर। मम्मी लोग निकलने से पहले हम लोग मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं।
मंदिर जाने के बाद we've just quickly visited the Adalaj Nivao. It's a step well over here. ये है अहमदाबाद में अदालज निवाव. लास्ट टाइम इफ़ यू रिमेंबर आई वेंट टू पाटन. पाटन में ना रानी की वाव है, इतनी बड़ी नहीं है बट इट्स स्टिल ब्यूटीफुल. लुक एट द वेल. बहुत गर्मी है अंदर. This is the best part of the vows. दूर से देखो तो ऐसा ही लगता है कि flat है. When you go like closer, you can see the whole thing inside. इसमें तो अभी ऊपर रखा हुआ है, but or else you can see the whole thing inside. देखो अभी हम लोग वहाँ पे नीचे जाके आए ना. Guys, यहाँ पे नीचे whale है. हैं? हाँ. Bye. Bye. Oh. હવે આપણે ભક્તિના લગ્નમાં મળશું. મારા લગ્નમાં મળશું. હા. ઓકે બાય. Enjoy your यात्रा. Okay. Guys, मैं वापस आ चुकी हूँ. My mom and them just left. अभी मैं अकेली हूँ यहाँ पे, कोई नहीं है. It feels so weird, man. Like when I came to India, dad, mom, and everyone was here. Now dad is also gone, mom is also gone. But it's fine. Everything ends at some point. Ends मतलब इतना भी कुछ sad नहीं है. सब लोग अपने अपने देश में ही गए. I'm in Australia, so I'll go to Australia tomorrow. But so I still have 1.5 day. मैं सोच रही हूँ. तो अभी मैं तो अपने friend के घर जा रही हूँ. All of you know, one of my friends stays here, and I'm just gonna meet all of them by the time I'm here. So I'll freshen up. I'll get ready. थोड़ा सा final packing भी कर लेती हूँ. I have to still weigh my bags and everything, distribute the weight and all as usual. So let's see. एंड फिर नहा धो के जाती हूँ. बाहर इतनी गर्मी है, बाहर से अंदर आते हैं ना इतना पसीना छूट जाता है. सो आई जस्ट या डू दैट एंड दैट विल बी द एंड ऑफ टुडे. टुमारो आई एम प्लानिंग टू गो टू पाटन. लास्ट टाइम आई वेंट टू पाटन. इट्स जस्ट नियर बाय हियर. आज हम ना अदालज की वाव गए थे एंड देन वी वेंट टू गांधीनगर ऑल्सो. एंड टुमारो इज़ माई लास्ट डे एंड माई फ्लाइट इज़ इन द इवनिंग. सो आई डोंट वांट टू लाइक गो समवेयर एंड गेट टायर्ड or get lost somewhere or whatever. I won't get lost, but still. And I like to go to Patan. वहाँ पे I'll just do there's a Shiv Mandir over there, so I'll just go there because यहाँ पे अभी shopping वॉपिंग कुछ करना नहीं है, so I don't want to like just waste my time. I mean again I also had the choice of just staying in my room and doing my editing because मुझे editing भी बहुत कुछ करना है. ये सब videos मुझे जो होते हैं ना इकट्ठे हो जाते हैं. But yeah, I don't want to like be in Ahmedabad and just stay in the room and edit. I'd rather go outside and see places outside. फिर वो flight में तो मैं free होंगी. So in the plane I'll edit my videos. And that's how we'll work it out. Guys, मैंने अपनी packing कर रही थी. मैंने सोचा अपने नए चश्मे पहन लेती हूँ. I usually wear those transparent ones. ये मैंने नहीं लिए थे. मैंने कच्छ में 2-3 बार पहने थे. Then I packed it. Now I feel like wearing them. वैसे नए नए glasses बना तो पता है इतना clear दिखता है सब कुछ. मैं अभी जा रही हूँ. मैंने थोड़ा सा काजल वाजल भी किया है. We might be going out, that's why I don't know. Our plans are not done now. Guys, do you know what? मैं आपको कुछ बताती हूँ. You know what? मैं यहाँ पे अभी सडनली आई ना इंडिया. लोगों को लगा कि मैं लड़का देखने के लिए आई हूँ, शादी करने के लिए आई हूँ. No, at least nothing as of now. नहीं नहीं नहीं, सिर्फ मुझे कुछ काम था इसलिए मैं आई हूँ. And also another thing, you guys have never seen my friend in my video. That's because he's not so comfortable coming in my videos, so I don't really take him. Also, I just wanted to tell all of you, whenever you see me taking vlogs or videos, मतलब you know कुछ लोग होते हैं जो मेरे videos देखते हैं and then they see me vlog. Honestly, if you're not comfortable coming and you see me taking a video, come and tell me. I swear, I don't mind. It's easier for me to like. It's not a big deal. I just don't take you in the video or I cut you off, so that's not a big deal. But अगर आप लोग मतलब बताओगे नहीं, so I won't know. So if you're really uncomfortable, please let me know and I won't even record you. Problem क्या होता है?
50 में से एक होगा जो maybe they're shy. They sometimes it's so confusing for me. Some people are shy to come in the videos, but they want to come in the videos. Some people make me take the videos so that I record them. तो इतना कभी-कभी मैं खुद confuse हो जाती हूँ ना, and it's like hard. There's so many vloggers and they take videos, and because of like one person or whatever, I'm not gonna like not record the other ones. So it's just something I thought I'll tell you. So no, don't be shy. मैं ऐसे कुछ करूँगी नहीं, मुझे बुरा भी नहीं लगता है. It's your right to. If you're not comfortable, you can always come and tell me. So now if you know that I'm taking your video and you don't like it, please come and tell me, okay? And not just me, anything. आप लोग अगर आप किसी को कुछ कहना चाहते हो, कुछ नहीं करना चाहते हो, just communicate. It's part of communication, you know, good communication. So अगर आप कुछ बताओगे नहीं तो सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कुछ भी. So it's good to communicate whatever you want to people. I really believe in good communication and interactions because honestly they create so many misunderstandings if it's not done properly. So yeah, try that. These are my old ones. Look at that. What the hell? I was trying to wear. Oh god. Look. I give up. एक तो ये मेरे silky बाल, you know. Just joking. You should always just love yourself. I've decided to go to Patan tomorrow. मेरे plan में था ही. And there's a गौशाला over there. मुझे कब से वहाँ पे जाना था. It's more like a hospital also for all the rescued cows and you know गाय माता and गौ माता and all this. There's so many वाछड़ीज, छोटी वाछड़ी मतलब cow, cow soup and calf. वो cow के बच्चे होता है ना वो. तो मैं जा रही हूँ and it's the first time I'll go. And કેટલા બધા વાછડા છે. અનાથ વાછરડાઓ છે, હા મા બાપ વિનાના છે. ઓકે. એ વાછરડાઓને દૂધ પાવામાં આવે છે ને, એ જે ગાયનું દોયેલું હોય ને, આપણે નાના બાળકની જેમ એની માં દૂધ પીવડાવે એમ આપણે ટોટી વડે દૂધ પીવડાવી છે. થોડુંક જ ભર. બીજી ગાય છે. हाँ भरत भाई देसाई यहाँ पे कार में टूर. सो आप लोग ये गौशाला में आओगे ना, आपको ये कार में टूर भी मिलेगा. सो इट्स अ वेरी बिग गौशाला, अलग अलग जगह यहाँ पे. सो लेट्स गो एंड सी, आई विल शो यू. अच्छा तो आटली बड़ी गाय છે અંદર. हाँ तो ये बेसिक गौशाला नहीं है, मतलब हॉस्पिटल की तरह है बिकॉज बहुत सारी बीमार गाय आती हैं. एम्बुलेंस है ગાયની 108. તો ત્યાંથી જે સરખી થઈને આવે એ બધી અહીંયા છે ને. So all these cows were sick before. वहाँ पे ठीक हो के यहाँ पे they are kept. This કેટલું નાનું વાછડું છે. કેનું વાછડું છે? કઈ ગાયનું? હાય ચીકુ. આ મારો આગળનો પગ નથી ને. હા આમથી આવી જાય. આમનો એક સિંગડું નથી. આ પેલી ગાય નીચે ઓલું છે ને, हम लोग इंग्लिश में मेस्टाइटिस वगैरह बोलते हैं ना. हाँ हाँ મિલ ગાય આપણે એની માં ઓફ થઈ ગઈ हाँ ટક્કરમાં, હા. એટલે 4 બચ્ચા. બરોબર છો. હા હા એટલે ટક્કર એક્સિડન્ટ થઈ ગયો હોય, ગાડી પેલું ઘસીને જતી રહી. શું છે મેન વસ્તુ કે જ્યારે અચ્છા ગાયની આંખીમાં કાંઈક થઈ ગયું છે. આને ના મોં છે, આપણે પેલા મોં આવે ખબર આપણે પેલા મોં આજીવન છે. તો આ ગાયને દેખાય છે આ દેખાય પેલું એનો આંખી. ઓકે હા આ વારી આ ફંક્શન હે. કઈ ગાય? નીલગાય. નીલગાય ને. Look at this type of a cow. This is also a cow. Guys, so these are all the cows who have different types of problems and they're just here. They've been taken care of very well over here. બહુ મોટી છે. સૌથી વધારે રખડતા ઊભી થઈ. શું
પાડશો આનું? શું પાડશો નામ આનું? તમે કોઈ તમને તમારી પસંદગી પાડી દઈએ. કેટલી મસ્ત છે. ક્યાંનો મને વાછડો રમાડો હતો. પછી બધી સરખી થઈને અહીંયા આવી જાય ને અહીંયા હોય. તો 1 વર્ષ પછી કેમ પ્રેગ્નન્ટ થવા દેવાની કે અશક્ત છે? ઓકે. હા 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 યસ. ઓકે. હા આ વારો અપંગ વિભાગ છે. બધી અપંગ છે અંદર. હા પછી તમે બધી રસ્તામાંથી એને રેસ્ક્યુ કરીને લઈ આવો. જે બીમાર હોય એ જ આવે. कोई पण एम पण कोई एक आ બધું જો ગોડાઉન में ચોરા રખા हुआ है. આ ગોડાઉન તમને બતાવું. ખાસું મોટું છે. કેટલી ગાયો છે? 1800. અરે આ શુદ્ધ શરૂઆત કરનારી છે. ઠીક છે. ઓકે. બંને પતિ પત્ની બંને શિક્ષક. કપિલા ગૌ માતા. હા કપિલા ગૌ માતા. આપણે એની માતા ખરા ને હા બહુચર એ લાવ્યા હતા. બહુચર આજે આ કપિલા ગૌ માતા. બોલે આપણે તો ઉપયોગ થવાનો. પ્લાસ્ટિક વધી જાય ને એનું પેટ વધુ ઉત્પાદન તો અહીંયા કોઈ ધૂળ કેવી ઠંડી ઠંડી છે નીચે, હે ને? મેઇન વસ્તુ આપણે એક તો અત્યારે વાતાવરણ સારું પાછું. હાય, બારે નથી નીકળવાનું. ચલો અંદર જાતે. હેલો, हाय ऑल यू वाचरूस, क्यूटी क्यूटी वाचरूस. The more interesting thing is कि ना ये सारे गाय normal guys नहीं है. They all like ये calf, ये इसके parents नहीं है. They were just found on the streets and on the way and they were all rescued. ये जो ambulances है ना वो at least the uncle said Ahmedabad की border तक जाती है, like from Patan. I've had a tour of the whole Gaushara. It's really nice. Like I came here. आज रात को ही मेरी आज रात को ही मेरी फ्लाइट है. मुझे वापस जाना है अभी अहमदाबाद and then I'll go. I don't want to get late. अभी मुझे मंदिर में दर्शन करके निकलना है. If you guys visit Ahmedabad, Patan is like 2.5 hours. अभी मुझे बहुत टाइम लग गया because रास्ते बन रहे कुछ तो बहुत टाइम लगता है. It's really nice. So do try to visit this Gaushara. It's my birthday on 15th June. तो मुझे कब से यहाँ पे आना था and I really feel nice. अच्छा लगता है सबके साथ, सबके मतलब ये सबके साथ. Guys अभी यहाँ पे क्लीनिंग चालू है ना. सारी वाछड़ी यहाँ पे है. પથમેડા ગામ ને. ઓકે, કેટલું દૂર છે અહીંથી? 125 કિલોમીટર. ઓકે. सांचोर થી બિલકુલ નજીક 5 કિલોમીટર. ओके. हाँ 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 અહીંથી એકદમ નજીક हाँ. નજીક છે. જે मनोरमा गौलोक तीर्थ. देखो गाइस काफ यहाँ पे आ गई सारी. हम लोग ना निकलने ही वाले थे, मुझे जल्दी है, लेकिन अंकल हैज इंसिस्टेड कि हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा खा के जाए. सो आई डोंट नो, हम लोग निकल ही रहे थे बट आई थिंक माई ड्राइवर एंड आई विल. કેમ છો આંટી? મજામાં? થેન્ક યુ દીદી. બસ બસ બસ, તાજી ગાયની છાશ. थैंक यू गाइस. हमने थोड़ा सा खा लिया, अभी फटाफट निकलते हैं. अहमदाबाद पहुंचने में भी टाइम लगेगा और रात को मेरी फ्लाइट है. थैंक यू मासी. મળશું. બાય. હા થેન્ક યુ મુકેશભાઈ. બહુ લેટ થઈ ગયો. રસ્તા પર ક્યાંક એટલે અંદર પાટણમાં ત્યાં गाइस ये महादेव मंदिर है यहाँ पे. लास्ट टाइम भी मैं आई थी यहाँ पे. इफ यू हैव सीन, अभी कोई नहीं होता, इतना अच्छा होता है ना.
दर्शन करके अभी निकलते फिर। गाइस यहाँ पे कुछ भी ऐसे फंक्शन वगैरह भी होता है ना, देयर सो मेनी पीपल हु कम हियर। ये शिवलिंग का भी इतना अच्छा सा डेकोरेशन हो जाता है एंड लाइक आरती भी इतनी अच्छी होती है महादेव की। राइट नाउ देयर इज़ नो वन, अभी हम लोग निकलेंगे। हाँ, अहमदाबाद पहुँचने में लाइक 3 घंटा कभी कभी लग जाता है बिकॉज देयर इज़ ट्रैफिक, वरना तो अराउंड 2 आवर्स यू रीच। मैं जाऊँगी एंड देन अभी मैं जा रही हूँ पाटन छोड़ के। टॉमी आया हाजी आया છે। हाय टॉमी। हाजी हेलो। મને તો યાદ છે लास्ट टाइम आई थी ना तभी भी यहीं पे ही था। हाय टॉमी। इतना प्यारा सा डॉग है, लुक एट हिम। हाय चाचा। चलो आई नीड टू लीव नाउ। Oh my god, I didn't know Ahmedabad airport has subway and idli sambar. ये renovate हो गया ना इसलिए I already packed my subway. Guys, I've checked in and my flight is now in just 1 hour. We're boarding and I'm going. I won't be vlogging on the way. मैं आज इतनी थक चुकी हूँ, मैं सुबह उठ के गर्मी में I was in Patan the whole day and मैं फटाफट आके अपना पैकिंग वगैरह सब कुछ किया. Everything was well. My trip is over, by the way. I don't know when I'll upload this video. Just not got the time as usual to edit any of my videos. So yeah, thank you so much, Abhi. I'll see you when I'm in Australia, hopefully. Guys, I wasn't gonna vlog, but you know me. So I've reached Singapore airport. For the first time in my life, I've booked this Scoot Airlines. It's like a small sister of Singapore Airlines. सस्ती भी होती है, लेकिन facilities नहीं होती है, but I didn't mind. So my flight is in like an hour. Let's go. So ये जो Scoot Airlines है उसमें TV भी नहीं है and you're not also given any meals, like complimentary नहीं होते, you have to pre-order or purchase them. और TV की वैसे भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी because I'm gonna edit my videos. तो it's my first time. I saw some photos on the internet. Let's see. I'm just recording to show you guys in case, because mostly people don't book Scoot. But sometimes if you have to, maybe it's okay if you're okay just like, you know, reaching at your destination and not getting any extra whatever services. My sister just messaged me there at the temple. She's giving her first Ayurvedic presentation today at the temple and I missed it because I'm gonna reach at night. My sister and my Jiju will come and pick me. I hope it goes well for her. Not so many people have that much awareness of Ayurveda and all, and it's funny how people think she's studying that and I'm a doctor. So you know, कभी कभी clash होता है. India में तो बहुत ही clash होता है, like allopathic doctors and Ayurveda and naturopathy doctors, they clash a lot. Even homeopathies and all that. But I mean, it's not that I'm always against it. I know I myself use some of the things, but it's more of a lifestyle management. You see, medicines is more of a quick one and curing and all that, but Ayurveda and all that is so much to do with lifestyle changes, and we know because we discuss these things at home, and I really believe in holistic approach to anything that happens. So the only problem comes when this Ayurveda and homeopathy and all those doctors, they give the patients false awareness and, you know, false hopes when they know that the patient, they won't even know. First of all, they won't even know because they're not qualified in the medical stuff. So because sometimes, especially in India, it happens a lot. They're given such, like, you know, false assurances and all those hopes when they know that the patient might need medical help to get better, and then it just gets worse. Guys, it's actually doable. वो TV भी नहीं है, वो pillow blanket वो भी नहीं है, but it's okay. It's just a normal flight. Thank you. This is the Australian Declaration form जो सारे passengers को मिलता है. अभी हमको fill करना है. So whatever you're taking, you just tick it off. Australia, and like I said, I did not vlog on the way. It's next day, Monday. I reached last night and I slept
and I didn't even wake up until my alarm rang. And I'm going to work now today. Guys, it's my birthday. I don't even know when you guys will see this video, because now I'm not gonna get time to edit anything, but I'll still try before I go to sleep. Anyways, my journey back was okay, and I reached, and it's nice and cold over here. Thank you so much for watching my videos. Thank you so much. Thank you so much for watching all the India videos. I hope you really enjoyed. I really miss Kutch now. I hope Bhagwan aap sabko khush rakhe, and thank you so much for taking out time to watch my videos. Guys, bahar barish aa rahi hai, but I see my mooli and them have grown. मैंने रेडिश के बीज डाल के गई थी, अभी they've started growing, but it's raining too much now. I'm mostly scared कि मेरी गाड़ी चालू नहीं होगी. बहुत टाइम से चालू नहीं किया, but Jiju was turning on, so I don't know. Oh my god, look, it's raining. चलो. चालू हो गई. Oh, thanks Juju. He kept turning on my car. वरना ना बहुत टाइम से गाड़ी चालू नहीं करते हैं ना, तो फिर चालू नहीं होती है.